Hello everyone, I am Miss Sonam, an early years educator, and today I am here to help you understand about 3D shapes. So let's begin. In our previous video, we have learned about 2D shape. In this video, we'll learn about 3D shape. 3D shapes की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे कि 2D शेप्स या फिर प्लेन शेप में क्या होता है, साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं, वैसे ही 3D शेप में क्या होता है. 3D शेप में हम फेसेस, एजेस और वर्टेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे. 3D शेप्स मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स. इसमें क्या होते हैं, एक हाइट भी आ जाती है. लाइक हम किसी भी शेप की लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट भी जान सकते हैं. सो लेट्स नो अबाउट द फेस, edge and vertex of each shapes. So before learning about the faces, edges and vertices of each shape, let's learn what is face, what is edge and what is vertex. So face क्या होता है, this outer line, है ना, this outer side of the shape which makes up the outline of the shape. This face, this flat or curved surface, जो भी, जैसे ये क्यूबॉइड है तो इसका फ्लैट सरफेस है, स्क्वायर होगा तो उसका कर्व सरफेस होगा. जो भी फ्लैट और कर्व सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं फेस. ओके, एंड वेयर 2 फेसेस मीट, जहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं, जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं एज. दिस लाइन इज एज. एंड वेयर 2 और 3 और मोर लाइन एजेस मीट, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एज मिलते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. वर्टेक्स इज द कॉर्नर ऑफ अ 3D शेप. ये देखिए यहाँ पे दिस इज 1 एज, दिस इज अनदर एज एंड दिस इज अनदर. यहाँ पे 3 एजेस यहाँ पे मिल रहे हैं. सो दिस इज वर्टेक्स. This is a cube. Now let's count the faces of cube. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cube has 6 faces. Now let's count the edges. 1, 2, 3, 4. ये साइड हम काउंट कर चुके हैं, तो फिर से नहीं करेंगे. सो 1, 2, 3. ये भी हम काउंट कर चुके हैं. सो 1, 2 and 3. This we have counted 1. This also we have counted. So 2. Total 12 edges. Now let's count the vertices. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 8 vertices. This is a cuboid. Now let's count faces of cuboid. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cuboid has 6 faces. Now let's count the edges. 1, 2, 3, 4. This we have counted already. 1, 2, 3. Again 1, 2, 3. 1 and 2. Total 12 edges. Now vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vertices. This is a sphere. Sphere has only one curved face. It has no edge and no vertex. This is a cylinder. Cylinder has 1, 2 and 3 faces, 2 flat and 1 curved face and 2 edges. Now this is a cone. Cone has 2 faces. First curved face and second is flat face. It has 1 edge and 1 vertex. This is a triangular pyramid. 1, 2, 3 and 4 faces. It has 4 faces. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 edges. 1, 2,
3 and 4 vertices. This is a triangular prism. It has 1, 2, 3, 4 and 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 edges. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 vertices. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.